Good morning to all. Today we will learn about some more different concepts of geometry. In previous class, or you can say in previous classes, in 2 or 3 classes, we were discussing about different types of solids and their properties. We have seen uh, the properties of cube, cuboid. Uh, we have also seen the properties of cylinder, cone, and a sphere. Okay, today we will see the the basic concepts about point, line segment, and ray. Okay, especially if I talk about line segment, ray, uh, these are in interrelated terms, and many students get confused in these terms. Okay, okay. So we will first start with point. Point. If we say about what is point, if I with this marker, okay, if I put a dot here, I am putting a dot here, okay, then what it denotes? It denotes a point, okay. And if I and if you discuss more about the point, we will see that through this point we can locate a definite location. Okay, for example, if I put some more dots there, we can also name it A, B, and C. Okay, what all these are showing? This is a plane surface. Okay, and don't write unnecessarily in the chat box, beta. I will give you chance. I will ask question, or you if you have any relevant question uh, uh, which are uh, not easily understandable by you, then you can ask. Use the chat box in it. First, you Jitendra, Divyansu, open your videos. Don't take online classes as a uh, just a video player. Amrit Raj, what are you writing? Okay, so we can say that point is a type of dot, okay, which gives us, or which can help us in locating a particular location. Clear? इनमें से अलग रैबिट्स कौन है? अमृत राज. I will contact to your class teacher, and then he or she will find who is the alag rabbits. Okay, and you have also also written wrong spelling of rabbits. He or she will, your class teacher will explain your good spelling of rabbits, and then he or she will block you. So it is warning for you, don't write unnecessarily in the chat box. Clear? Okay, so if we talk about point, it is a type of dot which we can. Amrit Raj, you are asking page number. First, you try to understand the concept. Okay. Uh, this A, this dot A,
is denoting the first location, this is denoting second location, and this is denoting the second location. So we can say that point always show a particular location. It is a dot which we can make with a pen or pencil on a plane. Okay. Okay. Now we will see the another concept. In this, you can write here that for point you can write a point. Write in your notebook. A point determines a location. Okay. Always remember, any dot that we put in a plane. Jingyan Rest, open your video. Any point, any dot that we put on any plane, it represents a point, and this point helps us in determining a particular location in a plane. Okay, so write it fast. Okay, next is lines segment. See here, we have just right now studied about point. If we put point in such a way, okay, then what we see? Then what we see that there are several points, okay, which are in a straight sequence. If we join all these, what we get? What we get from it? We can get a line, or if it is between 2 points, we can get a line segment. Okay. If I take suppose these are 2 points. These are 2 points, A and B. These are 2 points. If we join them, what it will give you? It will give you a line segment. Okay. I want to clear one concept here. Then I will explain each line, segment, ray, and line. Okay. It is to be made very clear that when we talk about line segment or ray, we have to always remember that in line segment, a line segment is a straight line between 2 endpoints. Whenever we join the 2 points, we get a line segment. Okay. Ankit, my voice is not clear.
I think it may be due to some network problem. Okay. It may be due to some network problem. Clear? So, but suppose if I have only one point, if we have only one point, then we can draw a straight line in any direction. You can say in any direction. Okay. It means it can show direction in this direction. It this can show. So it may be called as ray. Ray. Okay. I will discuss one by one, but first I am giving you clear concept between line segment and ray. Always remember, when there are 2 points, then only one line can be drawn. One straight line can be drawn to join this point. Okay, and which we call them as what? Line segment. Okay, and if we have a single point, we have single point, then from it we can draw infinite number of line, and each line will show or indicate in a definite direction. Okay, so we have to always remember that through 2 points we can draw one line segment, and through a point we can draw several ray. Okay, but if I start drawing a line, we can extend it in both directions. We can extend it in both directions. Here there is no any end point. Okay, then we will call it as a line. तो याद रखिए, लाइन सेगमेंट मैं एक एक करके फिर आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों का एक आपको जो इंट्रोडक्शन है मैं वो दे रहा हूँ. लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन किया जाता है ना. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. Here I have a thread. Here I have a thread which is very long. Okay, which is very long. You can see it is very long. Okay, if I ये एक आपका बेटा क्या है कि स्ट्रेट थ्रेड है. ये क्या डिनोट करता है? एक लाइन को. क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं, है ना. मैं इधर भी बढ़ाता जा रहा हूं, इधर भी बढ़ाता जा रहा हूं, है ना, इस डायरेक्शन में भी, और मैं चाहूं तो इधर भी इसको बढ़ा सकता हूं. ओके, सो व्हाट वी विल कॉल देम एज लाइन. इसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन बोलूंगा. ओके, जबकि अगर मैं इस पूरे थ्रेड का, इस पूरा जो ये मेरे पास थ्रेड है, इसका कोई एक पार्टिकुलर पार्ट ले लूं, है ना, उसके कोई पार्टिकुलर 2 पॉइंट का पार्ट ले लूं. जैसे मैंने अभी सपोज करो एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया, है ना, दिख रहा होगा. तो ये क्या हो गया? ये वन एंड पॉइंट और ये एक दूसरा एंड पॉइंट, है ना. तो ये बीच में हमको क्या मिल रहा है? ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है. ओके, ये हमको एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है हमको. क्लियर? ओके, लेकिन अगर सपोज करो कि मैं इसको एक तरफ से एक्सटेंड करता जा रहा हूं, है ना, इस डायरेक्शन से मैं इसको एक्सटेंड करता जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक एंड पॉइंट मैंने फिक्स रखा है, इसको नहीं चेंज करूंगा.
दूसरा जो एंड पॉइंट है ना, इसको मैंने हटा दिया। अब इसको मैं इस एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता चला जा रहा हूं, है ना। इस तरह के जो स्ट्रेट लाइन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रे। क्या बोलते हैं उसको? रे। ओके। अब सपोज करो कि मैंने दोनों ही एंड पॉइंट हटा दिए। मैं डायग्राम्स के थ्रू भी मैं समझाऊंगा। अगर मैंने दोनों ही हटा दिए, if I have removed both the points, what we will say? We will say it as a line. Okay. So इस बेसिक ज्योमेट्री में हमको ये चीज समझ लेनी है। मैं यहाँ पे बारी बारी से तीनों का मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा, उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। whenever we have two end points, और इसको अगर और आसानी से समझना है तो आप इस तरह समझ सकते हो कि मुझे सपोज करो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, है ना। ये मैंने पेन लिया और यहां से मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना। मैं करता जा रहा हूं, मैं इधर भी कर सकता हूं, इनफाइनाइट इधर जा सकता हूं, और इधर से भी मैं। सो इट मीन्स वी कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ओके। तो हमने ये एरो लगा दिया। ये एरो क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। हमेशा याद रखिएगा ये एरो व्हाट इट शोज, इट शोज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को शो करता है। it will show you that what is in which direction a particular line or a line or a ray especially is indicating. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस इधर एरो है, इसका मतलब ये इधर कितना भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इधर ये एरो है, मतलब इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं ना, एक मैं बीच में एंड पॉइंट डाल देता हूं। यहाँ पे मैंने अब एंड पॉइंट, अब तक ये लाइन था, अब तक ये लाइन था, पूरा का पूरा ये लाइन ही है ना। लेकिन मैंने क्या किया, बीच में एक एंड पॉइंट ले लिया, है ना। अब ये क्या शो कर रहा है? अब ये दो रेस बनने लगा, है ना। अगर मैं इसे ए ले लूं तो क्या हो गया, ये इधर एक ये एक रे बना जो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है ना। और एक दूसरा रे है, देयर इज अनदर रे व्हिच इज पॉइंटिंग इन द अदर डायरेक्शन। इसका मतलब है कि मैंने बीच में एक इन पॉइंट डाला, एक पॉइंट डाला तो मुझे ये मिल गया, है ना। मैं इन पॉइंट कहीं भी डाल सकता था। ठीक है। अब सपोज करो, अब मैं इस पूरे लाइन का कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूं, है ना। पार्टिकुलर पार्ट, सॉरी, है ना। यहां से लेकर यहां तक मैंने ले लिया, ए और बी। ये मेरा क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? लाइन सेगमेंट। बिकॉज ठीक है ना, ये क्या हो गया? ये हो गया लाइन सेगमेंट। इस गुड गुड जिज्ञान, इट इज line segment because it is a part of a big line. It is a part of a big line. Okay, clear? So मुझे लगता है कि अब आप लोग को लाइन सेगमेंट एंड रे में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। ओके। So some of the important points that we have to keep in our mind. First, it is about line segment. Line segment. First point. A line segment has two end points. अभी हमने जस्ट देखा है, a line segment two end point.
A line segment has two end points. Okay, clear? Next is since it is, so you can easily measure it. You can easily measure it because line segment can't be extended in any direction. Okay, लाइन सेगमेंट में हमेशा याद रखिएगा, इसको किसी भी डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू इन पॉइंट देयर एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट इज द इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए लाइन. ये एक लाइन का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसलिए इसका लेंथ जो होता है वो डिफिनिट होता है. ओके, एनी प्रॉब्लम? सो second point, you should write in your copy that a line segment, और आप इसको इस तरह से लिख लो, it has definite length. It has definite length, है ना? It has definite length. इसकी लंबाई निश्चित होती है, वो बढ़ घट नहीं सकता है, उसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं. ओके, एंड ऑब्वियसली जब इसके पास इसका डिफिनिट लेंथ है तो इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. मैंने अभी धागे के साथ बताया ना कि जैसे ये मेरे पास एक लंबा सा धागा है. ओके, ये मेरे पास एक लंबा सा धागा है ना? ये एक पूरा कहो कि एक लाइन है ना? किसी भी डायरेक्शन में, इधर में भी और इस इधर में भी, दोनों तरफ में बढ़ा सकता हूं. लेकिन जब मैं इसे छोटे से पार्ट को सपोज करो काट लूं कहीं से, तो क्या इसको मैं बढ़ा सकता हूं? इसको तो नहीं बढ़ा सकता ना. ठीक है, इसका लेंथ तो उतना ही रहेगा. ठीक है, तो जैसे चॉकलेट एक बड़ा सा होता है ना? उसमें से अपने भाई बहन को तोड़ के दे देते हो, तो वो क्या बेचारा, वो भाई बहन जो तुम्हारा है, क्या उस चॉकलेट का लेंथ अपने से बढ़ा सकता है क्या? नहीं ना बढ़ा सकता. बात तो क्लियर है ना? सो वी कैन से हियर इट कैन बी मेजर्ड. जब डिफिनिट लेंथ है बेटा, तो ऑब्वियसली इट कैन बी मेजर्ड. यस, it can be measured. Write it in your notebook. लाइन सेगमेंट को हमेशा इस तरह शो करते हैं. फिगर भी बनाओगे. हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू एंड पॉइंट. ओके, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा और इसके बारे में एक चीज लिख सकते हैं, है ना? इट इज ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन, कभी अगर क्वेश्चन आए ये what is line segment, we can say it is a straight path between two end points. Clear? Write it fast.
Write it fast. Some students have completed it. Okay. Now we will talk about line. We will talk about line. Okay. What is a line? We have just right now studied there that there are no, or there is no any single end point in this, in its path. So we can write that first point, it is a straight path, okay, which can be extended, endlessly in both direction. Okay, in both directions. Clear? सपोज करो यहां मैंने लाइन बनाया, तो इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी, मतलब दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको इसका जो डायग्राम बनाते हैं इसको इस तरह से करते हैं, है ना, ए और ये बी, ये डायग्राम बनाओगे। सेकेंड इज इट हैज नो डिफिनिट लेंथ। जैसे लाइन सेगमेंट में क्या था, okay, in line segment it has definite path, so it can be measured, but in line it has no definite length, so it can't be measured. Write it. It has no definite length. It has no definite length. Okay, so obviously it cannot be, or its length cannot be measured. It cannot be measured. Okay, or you can write it here, its length cannot be measured more appropriately. Its length cannot be measured. Okay, always remember, ये जो एरो हेड्स हैं, ये जो एरो हैं, ये क्या डिनोट करते हैं? दे शो द डायरेक्शंस। कन्हैया जी, ओपन योर वीडियो। यस, गुड जिज्ञान। Okay, now we will talk about another
ray. What is a ray? You wish you have still not written. Okay, no problem. If you, if any student, any student have written wrongly or due to some network problems may not have written what I have written in the on the blackboard, you may see the YouTube video of which link of which link I will share after some time in the same day. Okay. So if we talk about a ray, what is a ray? We have seen in line segment that it cannot be extended in any direction. In line, we have seen that a line is a straight path which can be extended endlessly in both the directions. But in a ray, if we talk about a ray, we can write here that it is a straight path. It is a straight path which can only be extended in only, or you can which can be extended in only one direction, in one direction. Okay. Here it is we have one endpoint that is A. Okay, and we have, it is not endpoint, it is just to indicate. And here I have put here one arrowhead which is showing that it can be extended in this direction. If I put suppose it is then we can extend it in this direction. Okay, so a ray can be extended in only one direction. Okay. Okay. Endlessly. Clear? You can draw the diagram of it. Since ray is also getting extended, so its length cannot be extended, cannot be measured. So okay, so you can write here, it can't, it has no definite length. It has no definite length. It has no definite length. Now very less time is